energy can be converted from one form to another. Now, let's go for the statement of the Bernoulli principle. I will say, for the streamline flow, of an ideal fluid, the sum of number one, प्रेशर एनर्जी. हमने अभी बेटा डिफरेंट एनर्जीज फ्लूइड की डिस्कस की. उसमें आपकी एक एनर्जी थी बेटा प्रेशर एनर्जी, दूसरी थी बेटा काइनेटिक एनर्जी, एंड द थर्ड वन वाज पोटेंशियल एनर्जी. सो आई विल से द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी and kinetic energy per unit volume is always constant. Now you can raise the question कि अगर हम बेटा different energies की बात करेंगे, as far as the fluid is concerned, we are having the energies in the form of pressure energy. That is the energy by virtue of its pressure. We are having the energy that's potential energy. That is by virtue of its position or height. And we are having the energy that's kinetic one. That's by virtue of its motion. लेकिन यहाँ पे बेटा मैंने pressure energy, potential energy, kinetic energy बेटा को नहीं लिया. लेकिन मैंने per unit volume की बात की बेटा. In fact, we can talk in terms of per unit mass as well. The reason is very simple, Gubernur. Suppose बेटा you are having applying the Bernoulli principle or Bernoulli theorem for the river. How come it is possible for you people to go for the pressure energy in total, the potential energy in total, that's or kinetic energy? We will go for per unit volume. We can calculate pressure energy or potential energy or kinetic energy per unit volume, but it is not possible to calculate the pressure energy or the potential energy or the kinetic energy of the river. So this is the statement for we people. In fact बेटा मैं statement याद रखने के लिए simply आपको बोलूंगा बेटा that it is nothing but the law of conservation of energy. जो बात मैंने बेटा बहुत बार रिपीट की कि जब हम बर्नौली प्रिंसिपल की बात करते हैं बेटा या बर्नौली थ्योरम की बात करते हैं बेटा, it is nothing but the law of conservation of energy for an ideal fluid in motion. Okay. अगर इसको मैथमेटिकली लिखेंगे बेटा, हमने अभी देखा बेटा as far as the pressure energy per unit volume is concerned, that was simply pressure for we people plus potential energy per unit volume. हमने अभी देखा बेटा the expression is rho gh plus kinetic energy per unit volume, that's given by half of rho v square. The expression is actually mgh as far as the potential energy is concerned, but in the given situation I'm talking about potential energy per unit volume. So on dividing by volume, it is mass per unit volume, that is density. Similarly here, and I can put it as this is Gouvernement constant. Your pressure energy per unit volume, that is equal to pressure. मैंने अभी भी बोला बेटा जब मैं term P लिखूंगा अब बेटा ये मेरे लिए pressure energy per unit volume भी होगी, and at the same time ये मेरे लिए simply pressure भी होगा. And rho gh, rho is the density of the fluid, g is acceleration due to gravity, h is the height of the fluid with respect to some reference Gouvernement, and half of rho v square. Rho is the density again and v is the velocity. Now in the given, I should say equation, I can say all the three parameters will change or may change. Your pressure energy per unit volume, or I can say pressure will change. The potential energy per unit volume, the kinetic energy per unit volume, all the three parameters may change or two parameters may change. लेकिन ऐसे change हो जाएंगे बेटा कि इनका जो sum है बेटा वो हमेशा रहेगा constant. That's actually the conservation of energy for the moving, I should say for the fluid in motion, for an ideal fluid. और इसी तरह बेटा मैं यहाँ पे कुछ और इसकी forms बनाऊंगा बेटा. I will write dividing throughout by rho g. जब मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा ये बनेगा p डिवाइड बाय rho g प्लस ये रहेगा सिंपली h प्लस ये बनेगा हाफ ऑफ रो कैंसिल हो जाएगा बेटा, इट इज v स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू योर रो इज कांस्टेंट. वी आर डीलिंग विथ एन आइडियल फ्लूइड, द फ्लूइड इज incompressible, so your rho is constant my dear, that's density is constant, because when the fluid is incompressible you can't change its density my dear, so the density is constant, acceleration due to gravity is constant, constant divided by constant is also my dear constant. This is going to be the another form of
of your Bernoulli principle or Bernoulli theorem. This quantity here is what we called as pressure head. This quantity is what we called as gravitational head. And this quantity is what we called as velocity head. So you can have, my dear, one more statement of Bernoulli theorem. You will write the sum of pressure head and the gravitational head and the velocity head is always constant. So I will put it as the sum of pressure head, comma, gravitational head and velocity head is constant. Okay, my dear. One more thing I can have. The expression for you people is that is P plus rho gh plus 1 by 2 rho v square is equal to constant. कभी कभार क्या होता है बेटा, जब फ्लूइड मूव करता है देयर इज नो चेंज इन हाइट. जब हाइट चेंज होगी नहीं बेटा, योर डेंसिटी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. या मैं बोलूंगा बेटा कभी कभार फ्लूइड जो है वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है बेटा, और there may be slight change in height but not reasonable or appreciable. और I can say जब fluid horizontally move करेगा बेटा, your h parameter will be constant. So rho is already constant as the fluid is ideal or incompressible. Your g parameter is constant, your h parameter is constant. So this stuff is constant. फिर constant को वहाँ पे ले जाएंगे बेटा, constant minus or constant plus constant is also constant, my dear. So we are left with, I will write to if fluid is moving horizontally, if fluid is moving horizontally, which implies h is constant, which implies rho gh is constant. Or I can say this entire constant term को जो आप shift करोगे that will be constant, minus constant, that is constant. I can write now P plus 1 by 2 rho v square. This is constant. This is going to be an important equation for v people, और इसको हम यूज करेंगे बेटा एप्लीकेशन में. अब देखो बेटा, इस यहाँ से अगर थोड़ा यहाँ पे बताता चलो बेटा, in some situation if there is reduction in the pressure, for the validity of this equation velocity has to change. या मैं बोलूंगा बेटा in some situation if there is change in velocity, suppose there is increase in velocity, pressure has to decrease. If there is decrease in velocity, pressure has to increase. In fact, this phenomena is what we call as pressure velocity trade-off. Pressure velocity trade-off. That in some situation if there is reduction in pressure the velocity will increase, if there is increase in pressure the velocity will decrease, so on and so forth. या इसी तरह बेटा अगर कहीं पे velocity बढ़ रही है तो pressure कम होगा, और अगर कहीं पे velocity decrease हो रही है तो pressure बेटा ज़्यादा होगा. Now let's go for the proof of the Bernoulli theorem. But इस equation का ख्याल रखिएगा बेटा, इस equation को आप याद रखिएगा बेटा, क्योंकि जो भी हम application part इस Bernoulli principle जो बहुत interesting है बेटा, वो हम बेटा इसी equation के basis पे लेंगे बेटा. This equation or this phenomena is what we call as pressure velocity trade-off. In some situation if there is increase in pressure velocity will decrease, if there is decrease in pressure velocity will increase, so on and so forth. Okay beta, let's go for the proof of the Bernoulli principle. This is the proof for we people. Let's have the diagram first. Let us suppose we are having a tube. ये हमारे पास एक ट्यूब है बेटा, with the varying cross-sectional area. This is the tube for we people. This is the fluid. This is some surface or reference level for we people. I call this as h is equal to 0 or x is equal to 0. Suppose बेटा इस वाले end की जो height है बेटा
if I call this as Gubernon N2, I will highlight different parameters. I call this as N2. Suppose this height is Gubernon H2 and I call this one as N1, and suppose बेटा इस end की जो height है बेटा वो हम मानेंगे H1. Okay, suppose the pressure on this side is P1. I will highlight few more parameters. The area on this side is A1. The velocity with which fluid is going in, या fluid is entering, is V1. And let's call this distance as, अगर हम इस distance को देखेंगे बेटा, let's call this distance as delta x1. और इसी तरह बेटा अगर हम इस एंड की बात करेंगे बेटा, सपोज यहाँ पे जो आपका एरिया है वो मैं मानूंगा A2, जो बेटा हमारी वेलोसिटी है इस एंड से, लेट्स कॉल एज V2, और यहाँ से जो प्रेशर है बेटा दैट्स गुबरम्योन P2, और जो ये डिस्प्लेसमेंट मैं मानूंगा बेटा, इसको मैं मानूंगा बेटा डेल्टा x2. नाउ for the proof of Bernoulli principle, the diagram is first very important in your exam, my dear. The another thing that will be the hint or the clue for you people that how to proceed, how to go for the proof of Bernoulli principle. Remember, my dear, for proof, or I should say for proof, we are going to use an important result from your chapter work power energy. I must recall you the result what we called as work energy theorem. वो result आपके ज़हन में होना चाहिए बेटा. अगर नहीं है बेटा, I can go for the statement as per work energy theorem. Work done by all forces is equal to change in kinetic energy. Now you can see, my dear, in the given situation जब fluid move कर रहा है बेटा, इस पे different forces काम कर रहे हैं बेटा. You can see there is gravitational force, my dear, and you can see अगर यहाँ पे इसकी height थी बेटा h1, यहाँ पे h2, so there is non-zero displacement as far as the vertical axis is concerned, so there is some non-zero work done by the gravitational force. इसी तरह बेटा there is one more work what we call as work done by pressure force, that is actually work done for transferring the fluid from one end to another end. We will also calculate work done by pressure force, और वो हम कैसे calculate करेंगे बेटा? The work is given by force into displacement. Force हम लाएंगे बेटा in terms of I should say pressure is given by force divided by area. Force implies pressure into area, so we are having the two forces जो यहाँ पे work perform कर रहे हैं. Number one is work done by gravitational force and number two is work done by pressure force. That is actually my dear work done for transferring the fluid from one end to another. और एक बात बेटा, work done is called a change in kinetic energy. That's actually the work energy theorem. You can see, my dear, यहाँ पे आपकी velocity v1, यहाँ पे आपकी velocity बेटा जो है v2 है, और क्यों ना बेटा different हो. You can see, my dear, there is I should say the change in area. In fact, I should say reduction in area. और हमने देखा from the equation of continuity, my dear, the product of area and velocity that should remain constant. If there is change in area, there has to be change in velocity, and if there is change in velocity or speed, there has to be change in kinetic energy. So I will say, Gubernu, for proof we are going to use work energy theorem. And as far as the statement is concerned, that is work done by all forces is equal to change in kinetic energy. That is K final minus K initial. Now let's first calculate work done by all forces. I will first calculate, my dear, work done by gravitational force. So I will write, my dear, work done. I will write work done by gravitational force. I will write work done by gravitational force. Now, as far as the gravitational force is concerned, that is acting in the downward direction, and you can see fluid is also coming down as far as the vertical axis is concerned. So the displacement is in downward direction, and the force, gravitational force, which is actually mg, is in the downward direction, my dear. And as far as the displacement is concerned, it is h1 minus h2 Gubernon. So we're done by gravitational force. I represent that by the symbol wg, that is given by the force, that is mg, into displacement. Displacement is h1 minus h2
H2 and it is cosine of 0 degree as fluid नीचे आ रहा है बेटा, यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा है H1 और यहाँ पे इसकी हाइट जो है कम है, या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम, तो बेटा मैं जब बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा दैट इज गिवन बाय H1 माइनस H2, तो फ्लूइड नीचे आ रहा है बेटा, सो योर डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, योर mg is in the downward direction, it is cosine of 0, or I can write work done by gravitational force that is given by mg, यहाँ से अगर डिस्ट्रीब्यूटिव आप यूज करेंगे बेटा mg h1 minus mg h2 and your cosine of 0 degree is 1. This is work done by gravitational force. Next I will write, my dear, work done by pressure force. Work done by pressure force, that is work done for transferring, work done for transferring the fluid, work done for transferring the fluid from one end to another. Okay, I will write that work done by pressure force, that is given by, यहाँ पे force की बात करेंगे बेटा, force is given by pressure into area, so you will write the force is P1 into A1. This is the force for you people, and as far as the displacement of this part of fluid is concerned, that is delta x1, and you can see the force and the displacement are in the same direction. यहाँ पे बेटा जब मैं pressure की बात करूँगा बेटा या corresponding force की बात करूँगा बेटा, that is in opposite direction. Fluid यहाँ को जा रहा है बेटा, लेकिन force opposite direction में, so the angle is 180. Because of 180 it is cosine of 180, that is -1. तभी मैं यहाँ पे minus लिखूँगा बेटा, और यहाँ पे अगर force की बात करेंगे, force is pressure into area, the pressure is P2, the area is A2, it is P2 into A2, और यहाँ पे आपकी जो displacement है बेटा, that is delta x2. This is the work done by the pressure force. Now we can go for, I should say, work energy term. जब मैं work energy term use करूँगा बेटा, I will write apply work energy theorem. जब मैं work energy theorem apply करूँगा बेटा, I will write work done by all forces is given by change in kinetic energy, that is delta K, that is K final minus K initial. Work done by all forces में आएंगे बेटा, work done by gravitational force plus work done by pressure force, that is given by K final. K final is given by 1 by 2. Suppose the mass of the fluid which is coming out is m, velocity है वहाँ पे बेटा v2 with the square minus 1 upon 2, mass m. It's mass m गोबरमेन, because जितना mass पर्टिकुलर टाइम में अंदर जाएगा बेटा, उतना ही mass जो है बेटा वो बाहर आना चाहिए बेटा. So it is 1 by 2 m v2 square minus 1 by 2 m, it is v1. यहाँ पे velocity बेटा v1 square है बेटा. Now work done by gravitational force, it is here my dear, work done by gravitational force, it is गोबरमेन mg h1 minus mgh2, then it is plus work done by pressure force plus, यहाँ से देखो बेटा, it's given by P1 A1 delta x1 minus P2 A2 delta x2 is equal to right hand side बेटा half of m v2 square minus half of m v1 square. आराम से देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखेंगे बेटा, A1 is the area here, ये वाला area बेटा, you can see it my dear, it is area here, और ये है बेटा displacement. When I'm saying area into displacement या area into third length my dear, that gives me the volume. तो उस volume को मैं suppose यहाँ पे V1 का नाम दूंगा बेटा, that is the volume of liquid going in, और यहाँ पे बेटा area जो है वो A2 है, और जो third length है बेटा that is delta x2. तो A2 into delta x2, let's call that as volume as V2. But in some time the volume of liquid which is going in should be equal to the volume of liquid that's coming out, और उसके लिए हम evidence भी ले सकते हैं बेटा. I will write here A1 delta x1, ये जो A1 delta x1 है, it is volume of liquid going in. Let's suppose this volume is V1 and A2, यहाँ पे बेटा A2, that's area into third length, that's volume. A2 delta x2 is the volume of liquid coming out. Volume of liquid coming out. And let us represent that volume as V2.
अब बेटा याद करो गुबरम्यून, if you will go for the conservation of mass here, law of conservation of mass, जितना mass कुछ टाइम में यहाँ पे in होगा, जितना mass यहाँ पे कुछ टाइम में in होगा, उतना ही mass leave करना चाहिए बेटा. So m is constant, but if you know the mass is expressed as your, in fact I can write density is equal to mass per unit volume. Your mass is expressed as density into volume. Mass is constant. How it is constant? जितना mass कुछ टाइम में यहाँ से in होगा, उतना ही mass कुछ टाइम में यहां से बाहर आएगा बेटा. सो mass is constant. अगर mass constant है तो density into volume को भी constant होना होगा बेटा. या अगर यहां पे आप mass m1 मानोगे, यहां पे m2, then m1 has to be equal to m2, but m is equal to rho into v. So rho v at this point should be equal to rho v at this point. Now as far as the density is concerned, the fluid is ideal, incompressible. So density throughout beta same. I can write the volume of liquid, that's V1 suppose here, which is entering, which is going in, should be equal to the volume of liquid which is coming out. So I can write, my dear, V1 should be equal to गुबरम्यून V2. अगर मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा बेटा, जरा ध्यान दो, यहाँ पे टर्म एरिया इंटू थर्ड लेंथ, दैट्स वॉल्यूम, एंड वन की बात चल रही है बेटा, that's volume of liquid going in some time. A2 delta X2, that's area into one more length, third length, again it is volume, but it's the volume of liquid coming out. My dear, from the law of conservation of mass, जितना liquid, जितना fluid यहाँ से in होगा बेटा in some time, उतना ही fluid बाहर आना चाहिए बेटा. ये हमने equation of continuity में भी discuss किया बेटा. But the mass is expressed as density into volume. So I will say the mass m entering here, let us call that mass as m1, should be equal to the mass leaving here in some time, that's m2. So mass constant है बेटा, mass same है बेटा. Mass अगर same है तो rho into v भी same या constant होना चाहिए. Rho is already same or constant because the fluid is incompressible or ideal, my dear. So density is constant. Now the volume should be also constant. That's why v1 should be equal to v2, my dear. So I will write now, my dear, इस equation को मैं लिखूंगा बेटा mg h1 minus mg h2 plus ये है बेटा P1, then A into delta x1. A into delta x1 is गुबरम्यून V1. Now V1 is equal to V2. Let us suppose both are equal to V, my dear. It is P1 into V, my dear, minus P2 as such. Then area into one more length, my dear. That's volume here. A2 into delta x2. Volume of liquid coming out, that's V2, और V2 भी V के बराबर ही है बेटा. Right side unchanged, half of m V2 square minus half of m V1 square. Let's rearrange in the equation, my dear. I will write यहाँ से बेटा, अगर मैं एक काम करूंगा बेटा, dividing throughout by v, I will write dividing throughout by volume. जब वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा ये आएगा mass per unit volume, तो वो आएगा density, that is rho g h1 plus ये आएगा बेटा rho g h2, बिकॉज mass per unit volume, यहाँ से वॉल्यूम टर्म बेटा एलिमिनेट हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ बचा आपको P1, यहाँ से भी वॉल्यूम टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचा बेटा माइनस P2, और यहाँ से हाफ ऑफ mass per unit volume, आई एम डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई वॉल्यूम, तो वो बनेगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर. लेट्स मूव ऑनवर्ड्स, ऑलमोस्ट वी आर एट द वर्ज ऑफ रिजल्ट, माय डियर. नाउ रीअरेंजिंग द इक्वेशन, आई विल फर्स्ट राइट P1 हियर, फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो जी h1, और यहाँ से काइनेटिक पैरामीटर को यहाँ पे ट्रांसफर करो, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा बेटा, प्लस हाफ ऑफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस P2 को वहाँ पे ले जाओ तो प्लस P2 बनेगा बेटा, और प्लस और did I make the mistake? Yes, there's slight mistake, my dear. You can check it. There's no problem. It is minus here. It's minus here. Sorry. It is minus here. Okay. Minus rho g h2 को वहाँ पे ले जाओ तो प्लस rho g h2 बनेगा बेटा. That is rho g h2, my dear. और यहाँ पे kinetic energy already है आपकी बेटा, प्लस half of rho v2 square. Can you see, my dear? P1 is the pressure energy per unit volume at end 1. Rho g h1 is the potential energy per unit volume at end 1. It is the kinetic energy per unit volume at end 1. P2, it is the pressure energy per unit volume at end 2. Rho g h2 is the potential energy, this is pressure energy, this is potential energy per unit volume at N2. 1/2 rho V2 square is the kinetic energy per unit volume at N2. You can see, my dear, when I am going from N1 to N2, my dear, there is change in pressure energy per unit volume, there is change in kinetic energy per unit volume, there is change in potential energy per unit volume, लेकिन
इन तीनों का सम इन तीनों के सम के बराबर, और आई शुड से माय डियर P plus rho GH plus half of rho V square is equal to constant. हमने बोला बेटा different energies will change और energies per unit volume will change, लेकिन ऐसे change हो जाएंगी कि उनका sum बेटा ये है state 1, ये है state 2, ये है position 1, ये है position 2. You can see my dear there is change in different energies my dear, लेकिन इनका sum बेटा हमेशा constant, which is nothing but the Bernoulli principle. You can see my dear pressure energy per unit volume plus potential energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume, इन तीनों का जो sum है बेटा that is constant, which is nothing but the Bernoulli principle. Okay. Diagram is going to be very important for you people my dear. This question is important. This question is very much important my dear as far as your board examination is concerned. इस question को बार बार देखिएगा बेटा, और इसकी applications को भी आप देखेंगे बेटा इंशाल्लाह. जब हम इसकी applications पे भी आएंगे बेटा उनको भी हम देखेंगे. It's going to be our journey towards, I should say, the applications. Applications of Bernoulli principle. Application of Bernoulli या Bernoulli's principle और Bernoulli's theorem. सुनिए बेटा आराम से. For applications we are going to use, I should say, the mathematical equation of the Bernoulli principle. That is the total energy of the fluid, of an ideal fluid, is always constant. That's P plus rho GH plus 1 upon 2 rho V square is equal to constant. Now as far as the term P, quick review of few things my dear. As far as the term P in the expression is concerned, your P is the pressure, but at the same time it is pressure energy per unit volume, and rho GH is potential energy per unit volume, and 1 by 2 rho V square is kinetic energy per unit volume. अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, जो मैंने इससे पहले भी लिया बेटा, if fluid is moving horizontally. If fluid is moving horizontally, then your H parameter is constant. When your H parameter is constant, your rho is already constant as the fluid is ideal, that's incompressible, the density is constant, G parameter is also your constant. Now I'm saying if the fluid is moving horizontally my dear, your H parameter is constant, or this entire stuff, or this rho GH, that's potential energy per unit volume, is constant. इसको वहाँ ले जाएंगे बेटा, it will be constant minus constant, that is also constant, or I can say it's P plus 1 upon 2 rho V square is equal to constant. This equation I am going to use for the applications. From this equation, for the validity of this equation, for the validity of Bernoulli's principle my dear, if in any case or any situation, if there is reduction in the pressure, then the velocity will increase, and if there is increase in pressure, the velocity will decrease, or I should say if there is increase in velocity, the pressure will decrease, or if there is decrease in velocity, the pressure will increase. In fact, P plus 1 by 2 rho V square is constant. This phenomena is called pressure velocity trade-off. Pressure velocity trade-off. It's going to be some sort of, I should say, trade between pressure and velocity. अगर कभी कभार प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा बेटा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी बेटा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ लेट्स हैव द एप्लीकेशन नंबर 1. ध्यान से सुनना बेटा. एप्लीकेशन नंबर 1 जो आप बेटा खुद भी परफॉर्म कर सकते हो. सपोज बेटा ये मेरे पास एक, मैं यहाँ पे एक बोतल लेता हूँ बेटा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक. किसी सरफेस पे मैंने रखा बेटा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हैव द स्मूथ सरफेस. फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा नहीं है बेटा. फिर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस साइड से सिंपली मेरे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब जो यहाँ पे ये नैरो स्पेस है, यहाँ पे जो नैरो स्पेस है बेटा, आई एम गोइंग इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा भी बेटा. ये जो यहाँ पे नैरो स्पेस है, और आई शुड से व्हाट वी कॉल एज कंस्ट्रिक्शन और रिडक्शन इन द एरिया,
आई विल ब्लो एयर, मैं इस स्पेस में एयर को ब्लो करूंगा बेटा। जब मैं इस स्पेस में एयर को ब्लो करूंगा बेटा, अगर कॉमन सेंस को यूज किया जाए बेटा, अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है बेटा, यू आर हैविंग द टू दीज बोटल्स माय डियर, फिर इस जो नैरो स्पेस है बेटा यहाँ पे, या कॉन्स्ट्रिक्शन है, या जहां पे एरिया कम, अगर इस गैप में हम बेटा एयर को ब्लो करेंगे बेटा, द कॉमन सेंस सेज दैट द टू आर गोइंग टू मूव लाइक दिस. They will move away from each other, my dear. They will move away from each other. If you are having the two bottles here, that the true example is actually, my dear, they are equivalent to two ships, my dear. लेकिन मैं सिंपल इलस्ट्रेशन या सिंपल ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं बेटा इस बात को समझने के लिए कि शिप्स जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं बेटा, वो कभी क्लोज नहीं रहते हैं बेटा, बिकॉज अगर वो क्लोज रहते हैं बेटा, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल दे मे कोलाइड विथ ईच अदर, एंड दैट्स गोइंग टू बी, आई शुड से, दैट्स नॉट गोइंग टू बी द गुड थिंग एज फार एज देयर डैमेज और अदर थिंग्स आर कंसर्न. सो मैं यहाँ पे दो बोटल्स को ऐसे रखता हूँ बेटा, फिर जो इनके दरमियान स्पेस है उसका एरिया कम है बेटा, देन आई एम गोइंग टू ब्लो एयर इन दिस स्पेस माय डियर. व्हेन आई विल ब्लो एयर इन दिस स्पेस गुबरम्योन, the question is what is going to happen. The common sense says they will move apart, but that's not going to happen. Listen to me, what is going to happen, my dear. बेटा जब मैं यहाँ से air blow करूँगा बेटा, there is constriction, there is reduction in the area, and from the equation of continuity, जहाँ पे area कम है बेटा, वहाँ पे velocity ज़्यादा. I must recall you, AV is equal to constant. If there is reduction in the area, if there is decrease in area, the velocity will increase. अगर velocity बढ़ेगी बेटा, अगर velocity बढ़ेगी बेटा, तो अगर इस zone में velocity बढ़ेगी बेटा, from this equation, from pressure velocity trade off, if there is increase in velocity, there is decrease in pressure. अब अगर इस जोन में बेटा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से ज़्यादा है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनको कोलाइड करवाएगा बेटा. दैट इज़ वाई कि दो शिप्स जो है बेटा उनको कभी बेटा, टू शिप्स विल कोलाइड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल. सो आई विल से माय डियर, टू शिप्स will collide if the distance between them is small. This is one of the application of Bernoulli principle. Application number 2 for you people, my dear. आपने देखा होगा बेटा during wind, or I should say during strong wind, जब strong wind होता है बेटा, जो roofs होते हैं बेटा, roofs जो होते हैं बेटा houses के, during strong wind the roofs of the houses or huts they are blown off. They are blown off. ये आपने देखा होगा बेटा, इनफैक्ट बहुत दूर वो बेटा उनके जो रूफ्स है वो पहुंच जाते हैं बेटा. द फिनोमेना इज एक्चुअली गवर्नमेंट लाइक दिस. सपोज ये किसी हट का, किसी मकान का बेटा रूफ है. दिस इज द रूफ ऑफ सम हाउस माय डियर. अब क्या हुआ बेटा, बाहर विंड है. नाउ इफ इट इज विंड माय डियर, अगर विंड है बेटा इट मीन्स वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है बेटा. That's for sure. When you are having the wind storm or tornado or you are having the hurricane, there is always increase in velocity. If there is increase in velocity, my dear, there is reduction in the pressure. Again, I'm using this same result, my dear, what you call as pressure velocity trade-off. For the validity of this equation, for the validity of Bernoulli principle, अगर कहीं पे भी बेटा, अगर कहीं पे भी आपकी velocity बढ़ जाती है तो pressure कम होता है. So outside the, I should say, roof, there is decrease in pressure, there is diminution in pressure. और बाहर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि इससे ज़्यादा है बेटा, जो इस रूफ को बेटा ब्लो ऑफ करता है बेटा, इस रूफ को उड़ा देता है बेटा. सो अगेन माय डियर, यू आर हैविंग द विंड आउटसाइड. व्हेन यू आर हैविंग द विंड आउटसाइड माय डियर, विंड इज हैविंग द एयर. The air, in case of wind, the velocity is government greater. When the velocity is greater, there is diminution in pressure, there is reduction in the pressure, and inside the house, inside the hut, there is, I should say, the atmospheric pressure. Or I can say the air inside the house, उसकी velocity ज़्यादा नहीं होती है बेटा. जब उसकी velocity कम होती है बेटा तो pressure ज़्यादा. या मैं simply बोलूँगा बेटा अंदर atmospheric pressure है which is greater than this pressure, क्योंकि outside बेटा आपका जो pressure है वो decrease हुआ because of the increase in velocity. As it is the case of wind, my dear, उसकी वजह से जो बेटा आपका रूफ जो है बेटा, या हट का रूफ या हाउस का रूफ है बेटा, वो ब्लो हो जाता है, वो उड़ जाता है बेटा. दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली प्रिंसिपल. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड एप्लीकेशन. जब मैं थर्ड एप्लीकेशन की बात करता हूं बेटा,
एक पर्सन से बोला जाता है कि आप प्लेटफॉर्म के नजदीक मत बैठो. A person while standing close to the platform at a station experiences a suction effect, my dear. आपने भी खुद नोट्स किया होगा बेटा, कभी कभार आप रोड पे चलते हो तो कोई गाड़ी आपके क्लोज आती है बेटा विद ग्रेटर स्पीड, और आपको लगता है कि आप उस गाड़ी के क्लोज या गाड़ी के साथ कोलाइड हो जाओगे. लिसन टू मी माय डियर, सेम थिंग माय डियर. सपोज बेटा यू आर हैविंग द व्हीकल हियर और यू आर हैविंग द ट्रेन हियर माय डियर, जो किसी रोड पे या ट्रैक पे जाती है बेटा. अगर आप इसके क्लोज बैठते हो, बेटा, सपोज मैं बोलूँगा बेटा, जब आप इसके क्लोज बैठते हो बेटा, जब ट्रेन आएगी बेटा आपके और ट्रेन के दरमियान या आपके और फास्ट मूविंग व्हीकल के दरमियान बेटा, there is small area, there is reduction in area, and whenever there is reduction in area my dear, there is increase in velocity my dear, and when there is increase in velocity there is there is decrement in the pressure. So आपके और ट्रेन के दरमियान जो स्पेस है वहां पे प्रेशर कम होता है बेटा, और आपके पीछे जो बेटा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पे बेटा हावी होगा, आप पे भारी होगा, and because of that atmospheric pressure you feel suction effect. So I can write in the third application my dear, a person while standing close to platform, a person while standing close to platform at a station experiences a suction effect. और ज़रूरी नहीं है बेटा कि ये ट्रेन के केस में होगा बेटा, अगर आप रोड पे भी होते हो, कोई फास्ट मूविंग व्हीकल आपके क्लोज जाता है बेटा, यू विल अगेन एक्सपीरियंस और फील दिस सक्शन इफेक्ट व्हेन a fast moving train passes by. When a fast moving train passes by. Okay beta, fourth application, there is the tool what we call as sprayer or what we call as atomizer. देखा होगा आपने बेटा. Suppose let's have the simple diagram of atomizer my dear. This is the container जिसमें fluid है बेटा, liquid है, suppose water है बेटा, then there is the pipe like this, और यहां से बेटा एक पंप लगा है बेटा. अब ध्यान से सुनो बेटा, जब यहां पे आप पंप करते हो यू आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द एयर. यहां से एयर की वेलोसिटी जो है बेटा, अगर मैं इस पॉइंट को बेटा सपोज x मानूंगा बेटा, दिस इज द पॉइंट x, एंड आई विल हाईलाइट द पॉइंट हियर y. जब आप यहां पे पंप करते हो बेटा, you are blowing the air. When you are blowing the air, the velocity at x that increases, because of that the pressure at x that decreases. और यहाँ पे जो नीचे बेटा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि बेटा इससे ज़्यादा है, अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो वो प्रेशर इस पानी पे एक्ट करता है और पानी ऊपर आराम से जाता है बेटा. एक बार फिर बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट हाईलाइट करो बेटा. इस पॉइंट पे आप एयर को बेटा ब्लो करते हो बेटा. when you are blowing air my dear, there is increase in the velocity of air in this region my dear. Because of that there is a decrease in the pressure. Based on the equation, I can write the equation again my dear. P plus 1 by 2 rho v square is equal to constant. This is nothing but the pressure velocity trade-off, which is actually the special case when the fluid is moving horizontally my dear, which is the special case of Bernoulli principle. So इस point पे आप air को blow करते हो, उसकी वजह से velocity बढ़ जाती है, pressure decrease होता है. Then the higher pressure, that is atmospheric pressure here, वो पानी पे act करता है और पानी ऊपर जाता है बेटा. And this is the working of the sprayer. इसी तरह बेटा अगर हम आगे जाए बेटा, the more applications, in fact there are there's a good number of applications, but I'm not going to discuss every one of them. I will discuss few more, then we will move onwards my dear. Now there is the most important, I should say the most beautiful, that is the dynamic lift. That is the dynamic lift. That is the dynamic lift on an aeroplane wing. That is the dynamic lift of an aeroplane wing. और aeroplane wing के लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा aerofoil. सुनिए बेटा आराम से, मैं यहाँ पे एरोप्लेन विंग बनाता हूँ बेटा. जो बेटा
एक आई शुड से अपवर्ड फोर्स या अपवर्ड ड्रिफ्ट, नेट अपवर्ड ड्रिफ्ट जो बेटा विंग पे पड़ता है बेटा, उसके लिए जो मेन फैक्टर होता है बेटा वो विंग का डिज़ाइन होता है। जो एरोप्लेन विंग होती है उसका डिज़ाइन इंपॉर्टेंट रोल बेटा प्ले करता है बेटा इन टेक ऑफ या इन इट इज़ बैलेंसिंग इन एयर माय डियर। एरोप्लेन विंग जब डिज़ाइन की जाती है बेटा तो ऊपर से बेटा वो कॉन्वेक्स होती है बेटा, या ऊपर से जो कर्वेचर होता है बेटा वो ज़्यादा होता है बेटा इन कंपैरिजन टू जब आप बेटा नीचे वाला साइड देखोगे बेटा। सो ऊपर से बेटा जो कर्वेचर होता है वो ज़्यादा होता है बेटा। सो आई विल से गवर्नमेंट, पहली बात इट इज़ कॉन्वेक्स स्लाइटली एंड दिस गाय दिस इज कॉनकेव। अब यहाँ से बेटा एयर आता है फ्रॉम द अपर साइड, आई शुड से लाइक दिस। यहाँ से अपर साइड से जो एयर आता है बेटा उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है बेटा। लेट अस सपोज आई कॉल दैट वेलोसिटी एज v1। अब जो नीचे से बेटा एयर आता है बेटा, ध्यान से सुना बेटा, जो नीचे से एयर आता है बेटा वो एयर ज्यादा कोशिश करता है बेटा इस रीजन को फिल अप करने की बेटा। वो एयर कोशिश करता है बेटा, जो एयर यहां से आता है बेटा वो एयर कोशिश करता है बेटा इस रीजन को फिल अप करने की। आराम से सुना बेटा, आई कैन हैव द इलस्ट्रेशन लाइक दिस। अगर अपर साइड की बात करेंगे बेटा, यू आर हैविंग द पार्टिकल विच इज हैविंग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन गोइंग विद द वेलोसिटी v। लेकिन इस बार क्या होता है बेटा, यहां से जो नीचे साइड से जो बेटा एयर आता है बेटा इट इज इक्विवेलेंट टू, उसके दो कंपोनेंट्स हमें निकलते हैं बेटा। अगर एयर यहां से आता है बेटा, एक रीजन या एक कंपोनेंट जो है वो कोशिश करता है इस रीजन को, इस वॉल्यूम को फिल अप करने की, बचता है उसका दूसरा कंपोनेंट जो आगे जाता है बेटा। हे माय डियर, एक बार फिर आई एम सेइंग गुबरम्यून फ्रॉम अपर साइड द मोशन ऑफ द एयर पार्टिकल इज ऑलमोस्ट लाइक द ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन जो नीचे साइड से एयर आता है बेटा वो कोशिश करता है जो विंग के नीचे बेटा रीजन है, जो विंग के नीचे बेटा वॉल्यूम है, इसको ऑक्यूपाई करने की बेटा। सो जो एयर आया बेटा विद सम वेलोसिटी माय डियर, लेट्स कॉल दैट एज v2 गुबरम्यून। जो एयर आया विद द वेलोसिटी v2 उसका एक कंपोनेंट बेटा यहाँ जाने को प्रेफर कर रहा है बेटा, मींस try to occupy or I should say try to fill up this region। जब ये रीजन फिल अप करने की कोशिश कर रहा है उसका एक कंपोनेंट सिर्फ बचता है जो यहाँ से हमें जाता है बेटा। इट इज इक्विवेलेंट टू कि यहाँ से जो वेलोसिटी है बेटा इन दिस डायरेक्शन गुबरम्यून, वो वेलोसिटी लेट्स कॉल दैट एज गुबरम्यून v2 या v2 डैश बेटा वो डिक्रीज हो जाती है बेटा इन कंपैरिजन टू दिस माय डियर। क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेफर करता है बिकॉज ऑफ द डिजाइन ऑफ द विंग, देयर इज द ग्रेटर वॉल्यूम हेयर। सो एयर जो है वो प्रेफर करता है इस रीजन को फिल अप करने की बेटा। मीन्स एयर का इट इज, मैंने एनालॉजी दी बेटा कि एक पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ से दूसरा कंपोनेंट यहाँ से, सो नीचे वाले एयर का जो बेटा या फ्लूइड जो नीचे साइड से जा रहा है बेटा उसका एक हिस्सा यहाँ को जा रहा है इस फ्लूइड को बेटा फिलअप, इस स्पेस को फिलअप करने के लिए, लेकिन एक ही कंपोनेंट बचता है। एंड यू नो फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द वेक्टर्स ये कंपोनेंट कम होगा बेटा अपने वेक्टर से। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन द वेक्टर। इन जनरल वी कैन से it is equivalent to the decrease in velocity here. If the velocity decreases here in comparison to the upper side, there is increase in pressure। और अगर यहाँ पे velocity बेटा ज़्यादा है in comparison to lower side, then there is decrease in pressure my dear। यहाँ पे आपकी velocity ज़्यादा है बेटा in comparison to lower side। Now you can see my dear pressure difference is created and your pressure, that is the pressure below the wing, that is greater than the pressure which is from the upper side of the wing। So because of this pressure difference my dear, we are having some net drift in the upper side my dear, which balances the weight of the aeroplane, not only the weight of the wing, the entire। and by the way अब हमारे पास सिर्फ एक ही विंग नहीं होती है बेटा, इसी तरह दूसरी विंग के लिए भी सेम मैकेनिज्म होता है कि जो एयर नीचे है बेटा इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई दिस वॉल्यूम फर्स्ट, मीन्स इसकी वेलोसिटी बेटा डिक्रीज हो जाती है बेटा बिकॉज ऑफ decrease in velocity based on equation p plus 1 upon 2 rho v square is equal to constant। if there is decrease in velocity there is increase in pressure, so यहाँ से pressure बढ़ेगा बेटा। so net drift will be in the upward direction because of that, and this pressure difference or net drift in the upward direction balances the weight। और बेटा और एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ बेटा, जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है बेटा जहाँ पे रनवे की जो बेटा लेंथ या डिस्टेंस होती है वो कम होती है बेटा, देयर इज द मैकेनिज्म जो इस विंग के डिज़ाइन को भी मॉडिफाई करता है बेटा। व्हेन इट इज़ द केस ऑफ टेक ऑफ, आप चाहते हो कि जल्दी ही वेलोसिटी बढ़े, जल्दी ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो बेटा जो विंग्स होती है बेटा उनका एरिया या कर्वेचर है वो और बढ़ाया जाता है, कुछ फ्लैप्स जैसे यहाँ पे लगे होते हैं बेटा। एंड जब
एरोप्लेन टेक ऑफ करता है बेटा, ये फ्लैप्स वापस जाते हैं. नाउ वी आर हैविंग द इंटरनेट प्रॉब्लम, वरना आई विल सजेस्ट टू यू पीपल ऑन यूट्यूब यू कैन चेक दिस एंड यू विल फाइंड अ वीडियो माय डियर, जहाँ पे इन द मॉडर्न एयरक्राफ्ट गवर्नमेंट देयर इज ड्यूरिंग टेक ऑफ a modification is done in the wing design or wing area, and once the aeroplane once the takeoff is done my dear, उसके बाद फिर ये अपनी, क्योंकि बेटा once the aeroplane has attained some height, फिर बेटा आपको बेटा सिर्फ mg और बेटा upward force को बैलेंस करना होता है, लेकिन पहले एयर को जब ऊपर लेना होता है बेटा, your I should say the upward force or net drift in the upward direction should be greater than Gouvernement mg. So this is actually the application of your Bernoulli principle. Okay, let's move onwards my dear. Now there are more applications my dear, but I will go for now last one, and that last one is what we called as speed of efflux. The speed of efflux my dear. देखिए बेटा आराम से, if I'm having some tank here, एक टैंक मेरे पास है बेटा, और यहाँ से इनिशियली मैं मानूंगा एक वैल्यू है, ये क्लोज है बेटा यहाँ से, और इस टैंक में बेटा जो लिक्विड है सपोज बेटा वो इस लेवल तक है, इस टैंक के अंदर जो बेटा लिक्विड है वो इस लेवल तक है बेटा, सपोज दिस लेवल इज गवर्नमेंट एच, ये लेवल है बेटा एच. मैं बोलूँगा बेटा इस वाली सरफेस का जो एरिया है वो A1 है, और यहाँ पे जो छोटा सा वैल्यू है बेटा इसका एरिया जो है बेटा वो बेटा A2 है, द एरिया इज A2 है. और यहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है बेटा मैं बोलूँगा उसकी वेलोसिटी सपोज V2 है, और यहाँ से बेटा जो लेवल नीचे आ रही है बेटा मैं बोलूँगा बेटा सपोज वो नीचे आ रही है बेटा विद द वेलोसिटी V1. ओके, उसके बाद बेटा I call this as reference level for V people. This is x is equal to 0. अब एक काम करूँगा बेटा, ये मेरे लिए एक पॉइंट होगा, और ये मेरे लिए जो सरफेस है बेटा लिक्विड की ये मेरे लिए दूसरा पॉइंट होगा बेटा. मैं दो पॉइंट्स के लिए बर्नौली एक्सप्रेशन या बर्नौली प्रिंसिपल लिखूंगा बेटा. फॉर अपर आई विल राइट गवर्नमेंट, दिस इज लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट ए, लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट बी. मैं बोलूँगा ऊपर जाके बेटा, ऊपर जो ऊपर वाला है बेटा वहाँ पे मैं प्रेशर मानूंगा बेटा पी ए plus this is the pressure energy per unit volume, or you call it as simply pressure my dear, plus I should say potential energy per unit volume, that's rho into g. इस point की जो height है बेटा वो h है गवर्नमेंट, that's rho gh plus kinetic energy बेटा मैं बोलूँगा सपोज जो टॉप जो बेटा इसकी लेवल है वो नीचे आ रही है with the velocity v1, so the kinetic energy per unit volume it is half of rho, I will say va square or v1 square, because here the velocity is v1 my dear, should be equal to my dear, it is government, I call this as PB plus rho G. इसकी जो height है या I should say height या position है with respect to this, that is government 0 here, plus यहाँ पे kinetic energy है बेटा 1/2 rho, the velocity is v2 with the square. You can see it is nothing but the Bernoulli principle, the total energy, that's the sum of your pressure energy and the potential energy and the kinetic energy per unit volume, that is constant my dear. So आगे चलते हैं बेटा, मैं बोलूँगा बेटा ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों एक्सपोज है बेटा टू द एटमॉस्फेयर, सो प्रेशर एट दिस पॉइंट दैट इज ए एंड द प्रेशर एट दिस पॉइंट, at both points the pressure is atmospheric pressure, so I will write PA, I will say like this, points or I should say the surfaces A and B are exposed to atmosphere, so P at A is equal to P at B is equal to atmospheric pressure, suppose that is P naught. Now let's go for the expression my dear. The expression will become PA की जगह बेटा P naught plus it's rho GH plus 1/2 rho V1 square is equal to PB is also my P naught, and you can see at this point the potential energy is 0 my dear, plus 0 plus 1/2 rho V2 square. I lost my P naught and P naught, so आपकी जो expression बनती है बेटा, आपकी जो expression बनती है वो बनती है बेटा, it is rho GH इज इक्वल टू यहाँ से है 1/2 रो V1 स्क्वायर, इस प्लस वाली टर्म को वहाँ पे ले जाओ तो माइनस आइए बेटा, इट इज 1/2 रो V1 स्क्वायर. Oh sorry, did I made the mistake? Yes,
it is 1 by 2 rho v2 square here minus 1 upon 2 rho v1 square. अब एक काम करो बेटा, यहाँ से I will go for rho GH is equal to, मैं 1 by 2 और रो को कॉमन निकालूंगा बेटा, you are left with v2 square minus v1 square. Now the question is, what is the requirement in the problem? The requirement for V people is कि यहाँ पे पानी किस स्पीड से बाहर आ रहा है, दैट्स एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज स्पीड ऑफ इफ्लक्स. सो आवर रिक्वायरमेंट इज माय डियर V2. हमें V2 निकालना है बेटा, पानी यहाँ से किस स्पीड से बाहर आ रहा है बेटा, दैट्स V2 एंड दैट विल बी आवर रिक्वायरमेंट इन द गिवन प्रॉब्लम माय डियर. अब यहाँ से देखो बेटा, रो एंड रो कैंसिल, 2 को वहाँ पे ले जाओ बेटा, सो यू विल एंड विथ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH. Now in the given situation my dear, our requirement is V2, but यहाँ पे और एक बेटा unknown हमारे पास है, that's government V1. इस V1 को निकालने के लिए बेटा I will make use of equation of continuity my dear. I must recall you equation of continuity. Our requirement is V2. What I will do, मैं V1 के लिए expression निकालूंगा. I will write A1 V1 is equal to A2 V2. जरा V1 यहाँ से देखो बेटा, आपको V1 मिलेगा बराबर V1 is equal to, it is A2 V2, A1 मल्टीपल में, इसको दफा करो बेटा डिवाइड में. जरा इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं बेटा, इसका वैल्यू इक्वेशन हमें बेटा, इस एक्सप्रेशन को देखो, हमें V1 को दफा करना है बेटा. आवर रिक्वायरमेंट इज V2, दैट्स एक्चुअली द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इफ्लक्स, दैट्स द वेलोसिटी विथ विच द लिक्विड इज कमिंग आउट, विथ विच द फ्लूइड इज कमिंग आउट माय डियर. अब मैंने क्या किया बेटा, मुझे V1 को दफा करना था, मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज किया. A1 V1 इज कॉल्ड A2 V2. हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहता है बेटा. यू कैन सी द एरिया इज डिफरेंट, यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एरिया बहुत कम है बेटा, सो द वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट. अब V1 को यहाँ से निकाला बेटा, जरा इसको इस इक्वेशन में पुट करो बेटा. आई विल राइट माय डियर V2 स्क्वायर एज सच माइनस, फिर है V1 की जगह बेटा आपका A2 V2 डिवाइड बाई A1, बट यू कैन सी माय डियर इसका बेटा अपना स्क्वायर है इज इक्वल टू 2GH. आगे बढ़ो बेटा. नाउ व्हाट आई विल डू माय डियर, V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे फिर से V2 स्क्वायर, देन वी आर लेफ्ट विथ A2 अपॉन A1 विद द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH. सिंपली बेटा मैंने क्या किया, स्क्वायर A2 बाई A1 को अलग से दिया और V2 को अलग से दिया बेटा. जरा V2 स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं बेटा. जब मैं V2 स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे आएगा बेटा A2 अपॉन A1 विद द स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH. अब बेटा A2 और A1 को कंपेयर करते हैं बेटा. A2 और A1 को जब आप कंपेयर करोगे बेटा, A2 है ये एरिया और A1 है ये एरिया, means A2 जो है it is far more smaller than A1. I will write my A2. आप देख सकते हो बेटा, A2 is the area here and A1 यहाँ पे एरिया, इस पूरी लेवल का एरिया बेटा, इस पूरे कंटेनर का एरिया बेटा. So I will write A2 is far more less than A1. जब A2 far more less than 1 है, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बहुत छोटा है बेटा, फ्रैक्शन का वैल्यू बहुत स्मॉल आएगा बेटा, लेस देन 1, 0 पॉइंट समथिंग और 0.0 समथिंग, तो स्क्वायर्स को और स्मॉल बनाएगा बेटा. I will say A2 by A2 is far more smaller than A1. I can write down now A2 upon A1 is less than 1. अगर A2 upon A1 less than 1 है, when you are having the term less than 1, उसका स्क्वायर चढ़ाओ तो और छोटा बनेगी बेटा. I can say A2 upon A1, उसका स्क्वायर ले लो, that will be less than 1. In fact, I can use the limiting case my dear. I will say A2 upon A1 with the square almost approaching to 0. अगर ये टर्म बेटा 0 बनेगी बेटा, यहाँ से बनेगा 1 minus 0, तो ये बनेगा V2 square. Simply 1 minus 0, that's 1 multiple में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, is equal to 2GH, or your V2 is equal to under root of 2GH. This speed my dear, this is what we call as speed of efflux. Speed of efflux, it is the speed with which liquid is coming out. It is the speed with which liquid is coming out. And you can see my dear, there is some remarkable thing as far as this result is concerned. जरा याद करो बेटा, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो फ्रॉम सम हाइट h,
फिर उसकी जो वेलोसिटी है बेटा फ्रॉम द आई शुड से द मोशन अंडर ग्रेविटी माय डियर, अगर आपको वो चीज़ याद होगा बेटा, अगर आपको वो चीज़ याद होगा बेटा, वहाँ पे भी बेटा द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट एज, वहाँ से भी आपको यही रिजल्ट मिलता है बेटा. सो आई कैन राइट द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट थ्रू ए होल एट अ डेप्थ एज, या एट अ डेप्थ एज बिलो फ्री सरफेस इज द सेम एज दैट ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी थ्रू द हाइट एज अंडर ग्रेविटी. और जब बेटा हम ये चीज़ देखते हैं बेटा, वी आर कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ इफ्लक्स, दैट इज द वेलोसिटी विथ विच द लिक्विड इज कमिंग आउट व्हेन यू आर हैविंग द लिक्विड अप टू द लेवल एच इज सेम एज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट एज. देन दिस रिजल्ट इज व्हाट वी कॉल्ड एज Torricelli's theorem. This result is called Torricelli's theorem. I can have the note right here. I will write the speed of liquid, the speed of liquid coming out through a hole at a depth h. You can see my dear, होल यहाँ पे है बेटा, और इसकी डेप्थ जो है बेटा दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू फ्री सरफेस या टॉप सरफेस, दैट इज Coulomb h at a depth h below free surface is the same as that of the. It's going to be the demonstration for we people which works typically on the Bernoulli principle, my dear. और यही इसी demonstration से आप बेटा समझ सकते हो कि जब दो ships cross करते हैं बेटा, उनके दरमियान जो distance है उसको क्यों increase किया जाता है बेटा. अगर distance कम होगी बेटा, there are the chances of collision, my dear. Listen to me, my dear, what I'm going to do. These are two tins here, my dear. What I have done, मैंने यहाँ पे क्या किया है बेटा, मैंने इनके दरमियान जो space रखी है बेटा वो बहुत कम है. So there is decrease, or I should say reduction in the area, and when there is reduction in the area, what I'm going to do, I will blow air in this constriction, in this space, my dear. क्योंकि यहाँ पे area कम है बेटा, अगर area कम है तो velocity of the air, velocity of the fluid, that is greater, based on the equation of continuity, that is AV is equal to constant. The product of the area and the velocity is always constant. So जब मैं यहाँ से बेटा air को blow करूँगा बेटा, the air encounters constriction, there is, I should say, velocity is greater, my dear, because AV is constant. Because of greater velocity, there is reduction in the pressure because of Bernoulli principle. That we are having the expression P plus 1 by 2 rho V square, my dear. That is actually pressure velocity trade-off. P plus 1 by 2 rho V square is equal to constant. So जहाँ पे velocity increase हो जाएगी वहाँ पे decrease pressure होगा बेटा. So in this gap, in this narrow space, my dear, there is increase in the velocity. When there is increase in the velocity, there is decrease in the pressure. So इस gap में जो pressure होगा बेटा वो कम होगा बेटा. जब pressure कम होगा बेटा, यहाँ से जो atmospheric pressure है ये इनको collide करवाएगा बेटा. You can see, my dear, I am going to blow air in this constriction, in this space, my dear. Now because of this, I should say, because of this narrow space, there is increase in velocity. Because of increase in velocity, there is decrease in pressure. और यहाँ से atmospheric pressure इनको close लाएगा बेटा. See, my dear, you can see ये एक दूसरे के close आ जाएंगे बेटा. close आ गए बेटा. You can see it once more. You can see जब मैं यहाँ से air blow करता हूँ बेटा, you can see, my dear, the common sense says that they should move apart, but based on the Bernoulli principle, there is increase in velocity, there is diminution, there is reduction in the pressure, and the atmospheric pressure brings them close. And the last attempt, okay, you can see. Thanks. That's all.